Imagine the map of India as a human figure. Then this part would be the hand reaching out to touch the waters of the Arabian Sea. Yes, you guessed it right. I am in Gujarat in the great white desert of the Rann of Kutch, and I'm here to celebrate the increasingly popular festival known as the Rann Utsav. In this episode, I'm going to take you to see the sights and sounds of Kutch. Because, as they say, if you haven't seen Kutch yet, you haven't seen nothing. A desert that looks like a field of snow. This wonderful and scenic geographical rarity is found in India only in the Kutch region of Gujarat. And it attracts visitors from all over the world who want their holidays to come with a twist. People who are not content with just shopping and eating out, but would like to soak in and take with them a piece of this moon-like heaven on earth. This breathtaking landscape is formed when seawater, aided by strong winds, is forcefully absorbed by the surrounding beach. The beach, being absolutely flat, allows for rapid evaporation, leaving behind a layer of crystalline salt. It is this salt that glitters like celestial dust in the day and on full moon nights. Realizing the potential of this white desert, Gujarat Tourism set up a festival that introduces the world not just to the natural beauty of the region, but also to the art and craft of its villages. The tent city is erected every year in the months of December and January, and it plays host to all those who come to witness the salt plains change hues in the different lights of the day. Craftsmen from the neighboring villages come to the tent city to show and sell their handmade wares. The region of Kutch is known for its colorful and detailed embroidery and mirrorwork. Every village community has its own traditional way of weaving and needlework. ये जो आपने बनाया है, इसको कितना समय लगता है बनाने में? सर, इसको 2 साल लगता है बनाने में। 1.5 years? हाँ, यस। अच्छा। घर का काम काज साथ। और इसको एक ही आदमी बनाता है? हाँ, एक ही बहन बना सकती है इसको। हाँ, वो क्या है, ये जो बारीक काम है, हाँ, वो इनका टाइम लगता है बहुत इसमें। ओके। और कितना दाम है इसका? इसका सर 8,000 रुपये है इनका। ओके। इसके अंदर भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। इसमें शीशे का भी है, हाँ जी, और एम्ब्रॉयडरी भी है, हाँ सब है, और यहाँ पे ग्लास बीड भी लगा है, हाँ जी, प्लास्टिक बीड लगा है, हाँ प्लास्टिक बीड लगा है। ये एम्ब्रॉयडरी के साथ है, ये मिरर लगे हुए हैं खाली। ये पूरा हाथ से एक एक तार करके बनाते हैं। इसमें 2 तार चलते हैं, एक इधर से चलता है, एक इधर से तार चलता है। तो वो ऐसे में जे ऐसे अलग अलग डिजाइन हो जाता है, जे वाला ब्लैक हो जाता है, जे वाला वाइट हो जाता है। अच्छा अच्छा। The Mutwa embroidery is perhaps the most intricate and fine of all Kutchi embroidery. ये फारुआ बोलते हैं इसे, ये है ना, हाँ, ये फारुआ। फारुआ बॉर्डर बनता है, फारुआ का। फारुआ की बॉर्डर बनती है। तो ये 4-5 मोटिव्स हैं जिनको लेकर ज़्यादातर यहाँ का कढ़ाई का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, और बहुत ही ख़ास एम्ब्रॉयडरी होती है, बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी होती है, जो महिलाओं के वेशभूषा में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। Another form of Kutch art is mud work that is applied to the walls of village huts. ये पूरा मिट्टी का बना है, उसके ऊपर वार्निश लगाया है, कम्बीरा। ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं बीच में कढ़ाई का काम हुआ है, किनारे अलग अलग कपड़ों को जोड़कर एक गोदड़ी यानी कि क्विल्ट बनाई गई है। इसमें भी वही मुतवा का बारीक काम किया गया है।
एक ऐसी गोदड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? साहब इसको लगभग 12 महीना 8 महीना लगते हैं। 12 महीना। हाँ जी, 12 महीने लगते हैं। Many of these designs are today outsourced by companies based in Delhi and other big cities. They are much admired for their organic colors and block prints and are collectively known as Ajrak. Ajrakpur, a town close to the region's headquarters of Bhuj, is the biggest producer of this type of block print. It's a lot of fun to see the work in the stalls. But it's even better to go and check out how the locals devote long hours creating works of unimaginable beauty and workmanship. आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण। नारायण। जी हाँ। नारायण, ये बहुत बढ़िया सामान है, ये सब जो आपने बनाया है। इसका कोई फैक्ट्री है या कोई जगह है जहाँ पे आप बनाते हो ये सब? ये हमारे फैक्ट्री नहीं है, लेकिन हम घर पे बना रहे इस गांव में। यहाँ से अंदर 1 किलोमीटर है। अच्छा, हम देखना चाहेंगे आप लोग कैसे ये काम करते हैं, कहाँ करते हैं। हाँ, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाऊंगा घर पे। ओके ओके, चलिए। Naran invites me to his family workplace, a cluster of traditional huts where the women of his family get together to make fascinating designs of patchwork and embroidery. Naran's place also works as a selling point where tourists select and purchase whatever suits their tastes and pockets. This system automatically removes the chances of a middleman pocketing a chunk of the profits. और ये नारायण, अभी हम आपकी दुकान से आए, हमने देखा वहाँ भी कुछ सामान, यहाँ हमने देखा कैसे आप लोग काम करते हैं, पूरा परिवार मिलके उसको बारीकी का काम जो करता है। कितना समय लगता है इस साइज की एक वॉल हैंगिंग बनाने में? इसमें हमारा क्या है कि सब अलग अलग एम्ब्रॉयडरी आता है। अच्छा। खारेक, पक्को, नैरण, सूफ ऐसे करके। लेकिन ये जो पीस है, ये एक लेडीज़ को बनाने में 3 से 3.5 महीना लगता है। ऐसा एक पीस बनाने में इसमें 3.5 महीना लगा है। घर का काम है, घर में करने का, और घर में गांव में ही रहने का, घर पे ही। क्योंकि देखो सिटी में आज लोग रहते हैं, 4 भाई होते हैं तो एक गठा नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जितना परिवार है सब एक गठा है। हम एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करने का। कच्छ का काम जो है सबसे अलग है पूरे देश भर के काम से। क्या वो चीज़ है जो कच्छ के काम को बिल्कुल अलग रखती है? कच्छ का तो क्यों है कि कच्छ में बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट है ये काम करने वाले। ये देखो, ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, फिर जो रोगाना करके आता है, रोगान आर्ट है, अजरक प्रिंट है, बांधनी है, ऐसे कर के बहुत सारे आर्टिस्ट है जो कच्छ में काम करते हैं। Our eyes opened by the variety and our curiosity whetted by seeing how it's done, we decide to explore further and watch the famous painted pottery of Kutch being made. The potters here believe that their tradition is as old as that of the Indus Valley civilization. In fact, Dholavira, which is one of the bigger Indus Valley sites after Harappa and Mohenjo-daro, is also in the Kutch region. While the wheel is worked on by the men, the women do most of the painting on the baked items. Today, this painted pottery is being kept alive by people like Abdullah Ibrahim Kumar, who's here with us and will talk to us about why he does what he does. आप ये बताइए, ये आप काम जो करते हैं ये आपके बाप दादाओं से चला आ रहा है, आप इसको क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? जैसे पहले क्या है कि इसी में खाना बनाते थे, खाते थे, पीते थे जी। लेकिन आजकल के थोड़ा बदलाव आ रहा है, तो पानी भी है वो फ्रिज में ठंडा करते लोग, जो गर्मी से ठंडा होता है, और उसके पानी पीने से भी शरीर अच्छा नहीं रहता है।
क्योंकि वो जो फ्रिज का पानी ठंडा है उसकी जो तासीर है जी वो गर्म रहती है। पानी ठंडा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये मटका का जो पॉट है, पॉट में पानी है, उसकी जो ठंडा रहता है और उसकी तासीर है पानी की वो एकदम ठंडी रहती है, गर्म नहीं रहती है। इतना मालूम नहीं है कि कहाँ से और कैसे सीख लिया ये सीख लिया और कहाँ से चला आ रहा है। तो ये ऊपर की दी हुई बख्शिश है, तो ये कभी कम होने वाली ही नहीं, बढ़ती रहेगी लेकिन कम नहीं होगी। As the Indus Valley digs have proved to us, it is ultimately the pottery that survives the sands of time. Much of what we know about our ancestors comes to us through the produce of their kilns, which their master craftsmen and potters left behind for posterity. There's a curious story prevalent here about the origins of pottery. It is said when the priests wanted to offer water to the sun god, they desired a vessel. And so the first man who provided that vessel was given the boon of becoming the father of all potters. I'm in a village called Ludia. It is also known as Gandhi Ka Gaon. It is famous for its exquisite wood carving that happens over here. नमस्कार, ये आपका नाम बताइए, क्या नाम है? नारायण भाई खज्जू। नारायण भाई खज्जू। ये जो काम आप करते हैं, ये आपको किसने सिखाया? सिखाया देखो साहब, हमारा ये परंपरा, अगर मैंने सीखा तो मेरा पिताजी काम कर रहा था तो उसको देख के हम फिर ऐसे सीखा। अगर मेरा लड़का होगा तो वो भी मेरे को देख के फिर सीखेगा। ओके, क्या बोलते हैं इसको काम को, जो वुड कार्विंग आप करते हैं, इसका कोई खास? इसका नाम है, इसका द्वाचार। अच्छा, इससे डिजाइन का नाम है। फिर ये डिजाइन जो है ना, इसको हम बोलते हैं कामड़िया। कामड़िया। फिर अलग डिजाइन का उसको होते हैं, कोई द्वाचार, कोई घोड़ा फुल, इसका नाम है। अभी आप क्या बना रहे हैं? ये बनाइए। अभी ये झूला बना रहे हैं हम। ये झूला है, इसको ये घोड़िया आएगा, घोड़िया में फिर ये लटकेगा। कितना टाइम लगता है इस झूले को बनाने? इसमें 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है। 1 महीना 10 दिन 12 दिन निकल जाता है। Even though the desert has few trees, Meghwal wood carvers like Narayan Bhai have built upon their knowledge of the family trade to keep alive a traditional occupation that, like the desert, seems to have no beginning and no end. Narayan Bhai's father, Khaju Bhai, echoes the same sentiment about continuity of such family occupations. Because, he says, they create value and honesty in a fast-changing world. ये पसीने का है धंधा, इसमें बरकत होती है। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पसीने का होती है, इसमें भगवान का भी ठीक होती है। कि पसीने का करके पूरा घर का करके खाते हैं, रोजी रोटी मतलब इसी में धंधा हमारा ठीक चल रहा है। Whole families are involved in living lives that are traditional and are intuitively connected with the soil. So while the Meghwal men carve wood, their women keep busy with their needle and thread. And with them, they transform yards and yards of common cloth into works of art. किसने सिखाया आपको ये? मारी माँ सिखायो। माँ सिखाई। पहले माँ सिखायो, सासू सिखायो ने मैं आता और उचेंता से क्या सिखायो। आपके ऊपर किताब भी छपी है, ये किताब है, तो आज आपको दुनिया में सब कोई जानता है। जानता तो है। कहाँ से आते हैं लोग आपसे ये खरीदने? घना लोग आवे से ना, आखी गुजरात में आवे से, बारा में आवे। विदेश से? हाँ, विदेश से आवे। ये विदेश से आवे है ना, ये भाई। ये हाँ। यहाँ पे आपकी किताब सम्मा बाई करके इन्होंने छापा है। आपका काम सारू लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल। आगे पीढ़ी जो है, जो छोटे बच्ची हैं, उनको आप सिखाती हैं ये काम? ये सिखाती है, नहीं चालू बैठा है। अच्छा अच्छा। तुम लोग को ये काम अच्छा लगता है करना? अच्छा लगता है। स्कूल जाती हो? हाँ, स्कूल जाता है। अच्छा, स्कूल से आके ये काम करती हो? स्कूल में आवे तो पछी था।
The village of Ludia is one of the many Kutch villages affected by the devastating earthquake of 2001. Today, the entire village has been relocated to another area. This has been possible because of the remarkable property of the way houses are made here. हम पहले यहाँ पे रहते थे, ये हमारा पुराना गांव लुड़िया, अच्छा। जो गिरा हुआ टूटा हुआ पहले से, ये हमारा इधर ये आपको कब गिरा है यहाँ पे? ये 2001 में जब भूकंप हुआ था ना। अच्छा, भुज में जिसका। हाँ, बस यही पहले से जो सब टूटा हुआ, ये हमारा अंकल का घर है, यही पुराना घर। अच्छा। पहले से जो टूटा हुआ, ये भी इधर भी ऐसा ही सब ये टूटा हुआ है। इसका मरम्मत क्यों नहीं किया दोबारा? नहीं, नया गांव बनाया सब अभी। हाँ। गांधीनगर गांव आपने देख रहा है उधर से। अहमदाबाद जो संस्था ने बनाया था मानव साधना ने, उधर अभी इधर से 20 हमारा कुटुंब था, 20 अभी पूरा जो हरिजनवास हमारा उधर चले गए, नया गांव बनाया पूरा। To understand what makes this kind of housing most suited to the area over here, we've come to the remains of the 2001 earthquake that hit the area. We have come to a old traditional Bunga house which belonged to Viru, and he tells me that this house was not affected by the earthquake. It remained standing even after the area was hit by the earthquake. I'm going to ask him what is it that makes this kind of housing, this kind of settlement most suited to the climate and the earthquake prone conditions existing here. वीरू, आप बताइए। पूरा मिट्टी का बना हुआ सर, मिट्टी का हम पहले ये जो मिट्टी का ईंट है ना, ये ईंट बना हुआ है। ये एक ईंट बनाते हैं? ईंट बनाते हैं पहले इसको। ओके। ईंट से पूरा जोड़ते हैं राउंड में, पूरा राउंड एक के ऊपर एक रख के। एक से एक पूरा। फिर इसके ऊपर गोबर आता है ना, जो गोबर, हाँ, उससे इसको लिपण करते हैं। गोबर का पूरा लिपण किया हुआ है, देखो। हाँ। पूरा लिपण करते हैं और उसके ऊपर ये डिजाइन बनाते हैं। एक चीज बताओ वीरू, जब भूकंप आया था तो आप बता रहे हो ये घर वैसे का वैसा ही था, गिरा नहीं। क्या वजह है उसकी? बस ये राउंड है ना, इसलिए राउंड में बना हुआ, पूरा हल्का है, इसके ऊपर वजन नहीं है इतना। और जो मेन वजन होता है वो इसके ऊपर रहता है, ये बीच में रहता है। हाँ, ये बीच में रहता है, ये मतलब इसके बीच में ऊपर रहता है। अच्छा। Tradition is deep rooted in the villages of Kutch. It is visible in the way children are dressed up from their early years. This perhaps is the reason behind the Kutchis' strong faith and liking for things that are made with the hands, even when it involved making leather from scratch. पहले ऐसे जो कुंडा आता है, कुंडे में उसको कच्चे चमड़े को डालकर फिर उनको 10-15 दिन ढक के रख देते थे। और जूता बनाता था, वो भी नेचुरल में जो भी चलता था वही बनाता था। घोड़े की वाग बनाते थे, कैमल का जो भी वो सवारी करने का जो था वो बनाता था, ऐसे। Today, leather craftsmen like Veera Bhai have devised ingenious ways of keeping the popularity of Kutch leatherworks alive by making things that appeal to the city dweller. Something that really appeals to a city dweller like me also turned out to be quite the favorite of the locals. I have with me Jani Bhai over here, who's an expert at making mawa, which is the favorite dish of the village of Bhirandiyara, which is about 25 kilometers from the place where the Rann Utsav site is. I have tasted this mawa once before when I was passing through the shop, and it was an amazing taste. I think I've got hooked onto this mawa. कितना दूध लगता है इतना मावा बनाने में? 20 लीटर? 20 लीटर का कितना मावा बनता है? मावा होता है 5 किलो। 5 किलो. It takes about 20 liters of milk to make 5 kg of mawa. The mawa is now fully ready and it's being lifted off. कितना डालना है? बस पूरा? पूरा? It's a bit hot, but I'm still going to taste this lovely mawa which Jani Bhai has made. थोड़ा चखाइए Jani Bhai. It's just too good. Too good. बहुत बढ़िया.
हमने बनाया. Many may not know this, but Gujarat is also home to the Siddhis, a group of people who came here from Africa with Portuguese sea traders. Today, the Gujarati-speaking Siddhis are an integral part of the state's cultural landscape, having retained the richness of their African heritage, which is visible in their dance called the Siddhi Dhamal. It's time for us to slip into a short break in our journey across Kutch. When we come back, we'll take you to the beach town of Mandvi, which lies in the south of this region. Mandvi is a must-do, must-see place for all those who come for the Rann festival. Located at the southernmost tip of the Kutch region, this port city is like many that line the long coast of Gujarat. Historically, Gujarat has been engaging with the rest of the world much before the word globalization came into our lexicon. This mixing of people through trade engendered a cosmopolitan culture that encouraged tolerance and respect for alien cultures, languages and tradition. Looking out into the Gulf of Kutch, Mandvi Beach has all the ingredients of a laid-back day off, which could include just listening to the sounds of the sea, or perhaps a safe trot on a horse, or maybe even a camel ride. Mandvi has enough to attract visitors and locals alike. The beach is also an apt symbol of the new and emerging Gujarat that aims at achieving a convergence of both tradition and technology. Giant windmills help provide uninterrupted power to desert villages where handicraft is the main means to a livelihood. From the beach, we take a detour to a palace in Bhuj that, despite its imposing magnificence, bears scars of the 2001 earthquake. While the region of Kutch, specifically the Rann of Kutch, is famous for its exquisite craftsmanship and artisanship, it is also home to a unique architecture.
The Rann of Kutch is also the home of the strikingly pink and elegant flamingo. These migratory birds that add color to an otherwise bare landscape come here to roost and start new families. In Indian mythology, the whole cosmos is said to have emerged from a single note of sound. So, it's no surprise that the making of bells and other sound instruments came to occupy an important place in Indian society. Bell making is an old Kutchi tradition that has today crossed the 7 seas. Bells like these are today being exported to be hung at the churches of Europe and America. I'm at a family that has been making these bells for generations. With me is Hussain Siddiq, who has been making bells like these since he was a small boy. हुसैन साहब, आप बताइए, आप कब से ये बेल्स बना रहे हैं? सर, मैं वारसा, मेरा काम ये परंपरा से चलता है और मेरी अवस्था जो 65 वर्ष की हुई और 15 वर्ष का वर्ष काम में लगा हूँ। पहली बार देखो तो क्या जो साइड बार लंबाई और पौड़ाई, ये इसका मेरे माप से जो होता है कि इतना इंच की लंबाई पौड़ाई होनी चाहिए, इतनी इंच की लंबाई होनी चाहिए। बाद में इसको वार के तोड़ के सांधा लगा के खाली कच्चा पैक करते हैं। बाद में मेरा लेडीज़ काम है, वो तांबा पीतल कांसा टक्करखार लगा के और मिट्टी की चपाटी बना के पैक करके भट्टी में जाते हैं। तो भट्टी में की वेल्डिंग हो गई और लाइट की लाइट हो गई। मिट्टी उतार के बाद में सुर डालने का। सुर मेरे साइड वार है और मगज शक्ति से सुर डालते हैं। The art of Rogankari or painting on cloth is a dying art form that is only found in Kutch. Today, there's only one family that carries on the tradition. भूज में हमारा म्यूजियम है, वहाँ से पता चला और इसी गांव में इसी फैमिली में 300 साल से ज़्यादा हो गया पारंपरिक से। ये हमारा लाइफ का फर्स्ट और लास्ट पीस है जो बॉम्बे म्यूजियम में पड़ा है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। आप लास्ट पीस क्यों कहते हैं? लास्ट पीस इसलिए कि क्योंकि कुछ वेरा भी होती है, बन जाता है कोई चीज़ें, जैसे ताजमहल एक बार बन चुका, दूसरी बार नहीं बनेगा, तो ये ऐसा ही पीस है। यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक के बाद क्या होना चाहिए, रिसर्जन कैसे होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे 24वीं जनवरी का वो भी शॉट दिया गया है जहाँ अर्थक्वेक हुआ। फिर यहाँ पे कुछ दवाइयाँ, वो हॉस्पिटल वो बना हुआ है। और फिर इसके बाद में रिलीफ कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया था कि ऐसे हो जाएगा गांव का सीन। और तब भूज का सिटी का कोई प्लान नहीं था। हमारी फैमिली में 2 नेशनल अवार्ड है, 3 NSC है, मैरिज सर्टिफिकेट, और 5 स्टेट अवार्ड है। लेकिन इतने सारे अवार्ड मिल जाने के बाद अभी भी लोग जान नहीं पाते, क्योंकि रेयर है, वर्ल्ड में एक फैमिली है। लेकिन अवार्ड दे देंगे, लेकिन इसको प्रमोट करना है वो नहीं होता है। In the beginning, this art using castor oil and natural pigment was done on clothes made of natural fiber. But with the coming of synthetic materials, Rogan is now used only as decorative paintings. The annual Rann Utsav has become a showcase of all that's rare and precious in the region, and which perhaps faces a real danger of being disincentivized by too much urbanization and development. The tent city, for its part, has been instrumental in bringing first-time visitors face to face with the treasure trove of local art and craft, sometimes even in the comfort of their living room. Luxury is redefined in what can only be described as the presidential suite of the tent city.
Once the Rann Utsav is over, this tent is packed up and the place goes back to being a desert. I have with me Mr. Pathak, who's going to show me around the various rooms of this tent. Yes, please. I will show all the rooms over here. It is called a Darbari also in our languages, local languages, Darbari tent. This is 4 bedroom plus the living room plus library room, reading room means, and the dining hall even we have in this tent. Okay. This is the bedroom of our Darbari shoot. Wow. Yeah. It's really beautiful. Decorated with the wall hanging pieces plus the our toranam. It has been handicrafts. It's look excellent for the interior decoration. And this is an air-conditioned place, right? Yeah, air-conditioned. Yes. Okay. Lovely, lovely. Is it an antique? It look like an antique piece. Yeah, yeah. Beautiful, beautiful. Just next to the tent city is a replica of a typical Kutchi village. It is made up entirely of traditional bunga huts, and it functions as a resort for those who want to get a feel of real village life. भाई ये जो है मिट्टी से bunga बनाता हूँ, ये मिट्टी से ऊपर इसके ऊपर जो ये ऐसी छतरी जैसा है उसके नीचे लकड़ियाँ डाल के ऊपर फिर भी मिट्टी का खोपड़ा चढ़ाता हूँ, उसके ऊपर ये तार बांध के इसमें घास डालता हूँ। ये छोटा काम है, ये ड्राइंग के हिसाब से ये छोटा बना के बाद में बड़े बड़े जिसमें आदमी रह सके ऐसे में उससे बनाता हूँ। तो इसमें आज की पीढ़ी में कभी न जान आनी हुई है, ना हम लोगों को ऐसा है कि जान आनी होगी। Detailed mudwork and paper cut patterns form the backbone of bunga interiors. To this is added a touch of typical Kutchi upholstery. And together they make for a unique resort that has no parallels anywhere in the world. Dhordo is the last village on Gujarat's border with Pakistan. After Dhordo begins the Great White Desert. It's a small village of about 500 people. I have with me the सरपंच of this village. रण उत्सव के आने से यहाँ पे लोगों को, गांव वालों को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या उनके कारोबार में वृद्धि हुई है? गांव का सर ये फ़ायदा हुआ, एक तो लोगों को रोज़गार मिला, और जब तक यहाँ के लोग हैं जो रणोत्सव होता है 1-1.5 महीने तक चलता है, 2006 से शुरू हुआ है। पहले 3 दिन चलता था, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना, अभी 1.5 महीना। तो उसमें जो लोग गांव के जो मजदूरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। और जो हैंडीक्राफ्ट है हमारा यहाँ का जो फेमस है, उसको मुतुआ एम्ब्रॉयडरी वर्क जिसको बोलते हैं, उसके लोगों को जो बना के रखते हैं वो साल भर का 1 महीने में बिक्री हो जाता है। A fair like the Rann Utsav may be a new beginning, but it's a superb way of connecting thousands of years of Indian living culture to a generation of city dwellers that has only had but a passing acquaintance with it. It is also a way of renewing the world's faith in the idea of India as a land where many diversities have learned to live and work in peace. All good things must come to an end. And so does our wandering through this beautiful and fascinating place. We hope through this episode you learned and saw a few more things about your country. So until the next time, we are ready to give you another glimpse of amazing India. This is me,
Dhiraj Singh saying thanks for watching. Namaskar.